One order from the top court and two distinctly strong reactions. The top court diktat, all stray dogs off the streets of Delhi NCR in 8 weeks. A howl of protests from dog lovers and animal rights activists. A counter pushback by those wanting a nationwide order, not just restricted to Delhi NCR. Since the order, protests have broken out at India Gate. Rescuers, feeders, dog lovers showing up. So did the cops. Detentions followed, emotions ran high. The cops armed with top court's order to clear the streets of dogs or face contempt. A protest that got political, with Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi taking on the top court order as a step backwards, calling stray dogs not problems to erase but lives to protect. He called the order cruel, short-sighted and inhuman. But the Delhi Chief Minister Rekha Gupta welcomed the Supreme Court order, calling stray dogs a big problem for Delhi. इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। While the exact order is yet to be published, it was contended in court that stray dogs are already being picked up, something confirmed by local municipal councillors to India Today. The Chief Justice of India, B.R. Gawai, has now assured to review a plea challenging the Supreme Court's contentious directive to relocate all stray dogs to shelters in 8 weeks. Amidst the crackdown, voices of dissent grew louder. Fresh protests by dog lovers and activists were seen in Film City, Noida, where some of the country's biggest news channels are located. No 2 pounds! 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 What you're seeing behind me are a section of people who are dog lovers, who are protesting against the Supreme Court order, which have asked to remove the stray dogs from the streets. They are also partly angry with a section within the media about a coverage that they say has actually led to the protest in the first place. They want the ABC program, which is the animal birth control program, to be implemented nicely, because that's the only scientific manner in which you can reduce the number of dogs on the streets. This is not the right way to actually have strays removed inhumanly, and that's the reason they are protesting. While the increasing dog menace is a real problem, especially within the Delhi NCR region, recording the highest dog bites in the country, the current top court diktat seems unimplementable, with what is estimated to be a 10 lakh dog population compared to just 20 recognized dog sterilization centers. In fact, India Today found out that some dog shelters in Delhi are not even functioning properly. A shelter should have a kitchen, so there's a small kitchen where the food is being prepared. This is the dog's kitchen. The situation seems to be deplorable because the entire center needs a little bit organization. There is no cleaning as such. While there is an infrastructural abyss and Delhi will have to spend more on dog shelters than it does on public health to just implement the Supreme Court order, questions need to be asked of the overtly underwhelming performance of the MCD to control the dog menace in Delhi. In 21-22, the MCD spent 5.9 crores on stray dogs, of which 5 crores went towards sterilization and just 70 lakh towards building sterilization centers. A Delhi Assembly panel estimated the stray dog population
at 8 lakhs in 2019, up from 5.6 lakhs in the last census of 2009. Comparable trends are visible in other metros. Bengaluru spends nearly 9.4 crore tackling the stray problem, while Mumbai BMC spent 11.2 crores the same year, which is financial year 2022. The low spending by the MCD comes even as dog bite cases surge. In Delhi, reported cases jumped nearly four-folds. In January 2025 alone, the city logged 3,196 dog bite cases. If the MCD even spent 6 crores on stray dogs as it listed for financial year spending the year 2021-22, then there had to be some documentary evidence on ground. What is to the contrary. Meanwhile, caught in this tug of war between humane care and hardline cleanup, Delhi faces a crucial question. Can the city find a compassionate way to keep its streets safe without losing its soul? Bureau Report, India Today. All right, viewers. So this is a battle which is brewing now not just in the national capital and the NCR region, but across the country. We've had dog lovers, activists, celebrities, regular people who have come out and questioned this particular order coming from the Supreme Court. For them, the good news is that the Chief Justice of India has taken cognizance and will look into the matter. I want to take all these questions to our panelists this evening. Joining me in just a short while will be Vijay Goyal. He's a BJP leader. He's actually the biggest proponent of the Supreme Court order. He's taken out a yatra all across Delhi, which practically lauds the Supreme Court order, suggests that it should actually be implemented across the country. Larger questions, of course, on infrastructure. Do we really have the kind of infrastructure to support an order such as that still remain unanswered? We're going to take those questions from him. Gawai Mulekhi, animal welfare strategist, is with me. Dr. Sanjeev Bagai, chairman, Nephron Clinics. Dr. Ashar Jesudos, executive member, Delhi Animal Welfare Board. Rahul Ishwar, philosophy author and Hindu activists. I'd like to, before all of that, I want to cut across to Gawai Mulekhi, animal welfare strategist. Gawai, all right, we don't have Gawai with us. We're going to cut across to her in just a short while from now. But Dr. Ashar, if you'd want to come in. Well, the Chief Justice of India has said that he's going to look into the matter, which clearly has the society divided. Lots of questions, Dr. Ashar. We spoke with you, yesterday as well, to take the conversation further. Ultimately, there is a crisis that Delhi is facing if you're going to look at sheer number of dog bites where the dog menace is concerned. The MCD has clearly somewhere down the line performed terribly. It could be corruption, it could be multiple reasons, but the sheer fact it hasn't done its job lands us in a position that we are in. But Dr. Ashar, the larger question is why should people suffer collateral in midst of dog right activists and what the Supreme Court said? Right. So I think we should begin by understanding, I think, that everyone on this panel wants a solution, right? And so do we. And it's just a question of how you get these solutions, what's the science behind it, what are the laws behind it, and what is the morality behind everything that you do. And I believe that Indians are a compassionate people at the core, right? And I think that belief is something I will hold dear to me all my life. And based on that, we need to understand that there are a set of rules in place which have been upheld by the Supreme Court of India previously. They're called the Animal Birth Control Rules 2023. All had. It's just that no one's taken the time to open the rules and read what's written inside, right? Coming back to your next question, who's to be accountable to this? The Municipal Corporation of Delhi should be held single-handedly responsible because they run 20 animal birth control centers. As you could see, one of your reporters was at a center and they saw what miserable conditions the dogs are kept in over there. They claim to have sterilized 7 lakh dogs in the last 7 years, whereas my estimate is that there aren't 7 lakh dogs in all of Delhi. And if there are, then all of them should be sterilized.
according to the MCD data, which means that they've taken all this money that you said that was spent in sterilization and not in setting up centers, and we don't know what they've used for. The animal birth control rules mandates CCTV cameras in every operation theater. It mandates a monitoring committee to be established at the local level and at the state level. In most places across India where these people are demanding a solution, these monitoring committees haven't been formed, and numbers are highly inflated. They're taking the money. They're not sterilizing the dogs. In fact, they're not following the ABC rules at all. The ABC rules also say that they need to run education drives whenever they pick up dogs, to tell people what the rules are. Like the kuda vehicle that comes to our locality, it says gila kuda yahan, sukha kuda yahan. That's educating people about what waste segregation is all about. The municipal corporation doesn't do that. It doesn't tell people how to solve the problem. It doesn't solve the problem. They just take all the money and they don't do any work. And that is where the problem lies. And that Okay. the government, the BJP is, I mean, we're really hopeful in this government, even now, that they will understand the source of the problem and deal with it where they should. So hold the municipal commission, municipal corporation responsible, and not take out all the angst on, a vulnerable section of our society, which is the dogs. All right, Dr. Sanjeev Bagai, you've been very, very vocal, especially where, the rising cases of dog bites are concerned. And at least if you look at prima facie, the figures, Delhi has the highest numbers of dog bites across the country. So clearly we failed somewhere. But then when you look at this particular order, which is coming from the Supreme Court, is that the solution? Because we clearly also lack the infrastructure to support where each and every dog, as per the last census, which was in 2018, it seems we are standing at a population of 10 lakh dogs, and we only have functioning 20 sterilization centers. So there is a huge abyss where infrastructure is concerned. Good evening. The first and most important thing is to make a distinction between pet dogs and stray dogs. The stray dogs are a risk to life. They are endangering life, endangering children's health and the elderlies. At no point of time, my view is that we should have any cruelty or any inhuman behavior towards any animal. But we can't convert our city, our residential colonies, our homes right outside our gates into a Masai Mara or a Serengeti. That is unacceptable. Stray dogs bites, and we know the statistics. There are more than 37 lakh bites in India every year of dog bites. And mind you, most of these cases go to private clinics, general practitioners, where the cases are not being documented, recorded, and the census is therefore underreported. Point number two, obviously the civic authorities haven't done their job in the last 10 years. There should have been an infrastructure capacity building. That's not happened. That needs to happen. But if you have stray dogs on the streets, you're going to have bites. We know the rabies cases, and everyone is saying the rabies cases are just 54 this year of it. The word just is wrong. Every human life counts. The issue here is it's not only about rabies, it's about the lacerating injuries, nerve injuries, orthopedic injuries, severe reconstructive surgeries which are required for small children and elderlies, fracture neck femurs, head injuries which elderlies face. Dogs in the streets, for a variety of reasons, attack human beings. You can't have a stray dog which is aggressive in the same micro environment as residential homes. That's the distinction point. We need to be Dr. more Bagai, compassionate. fair point. We need to be more in. compassionate, but how do we do that in letter? Because technically, with what you're suggesting right now, that this is a death sentence for the stray dogs, at least in the Delhi NCR region. We understand that because we don't have the infrastructure. We tried doing this without a Supreme Court order, which was, during the Commonwealth Games, and we saw what really happened. So are we okay accepting that we are signing off on a death warrant for lakhs of dogs at the cost of what needs to be done, for the citizens of the country, of Delhi, who are facing what they are facing thanks to the laxity of the MCD? Just a quick point I want to add. In fact, just two quick points with your permission. Yes, the time constraint of 2 months may be too short, but let us start the process. The only way to move forward is to take a first step forward. There is
absolute possibility of creating these shelters and looking after the dogs, sterilizing them and vaccinating them, and over a period of years, the stray dog population will go down. The second point is, I want people to appreciate the pain, the torture, the harrowing experience of small children undergoing reconstructive surgeries or indeed working in a rabies ward. There is nothing which is more disastrous, painful, and emotionally and psychologically challenging than to look after these patients. I want people to understand the pain the families go through. It's not only a human being life lost, a family gets destroyed. No, fair point. But we're once again, and I'd bring in, I'd bring in our other guest, Gawai Mulekhi, as well. But viewers, we're once again then, Dr. Bagai, for the sake of an argument, because entrusting the same agency that has failed till now, abysmally so, to carry out a program which is mandated by the top court. And we are hoping that they'll succeed this time, which looks implausible. I want to bring in Gawai Mulekhi because, Ms. Mulekhi, there's a larger question here. We can sit here ad nauseum, debate about animal rights, animal welfare, that this is a death warrant, but ultimately try explaining that to somebody in a Narela, in an Angloi, who's taking their little child to the school in the morning, gets attacked every morning by a pack of dogs, or somebody on their morning walk, or a delivery agent who faces this trauma day after day. Correct. We have to change the way we are perceiving the problem at this time. We have approached this problem as if it were a civic problem to be dealt with by municipalities for the past 25 years. 2.5 decades we've given to local authorities like MCD, other municipalities and panchayats across the country. They have failed miserably for lack of consistency, for lack of compliance with the central government rules. Sometimes it's the budget which is short, sometimes it's the monitoring which is not there. Sometimes there is so much corruption that while the program goes on paper, nothing happens on the ground. That's something that a combination of all three we saw in Delhi happening for the past 2.5 decades. But we need to look at it as a public health problem and a veterinary health problem, not even animal welfare. So let us look at it only from the scientific point of view. Now, for instance, if we have a magic wand and we remove all 10 lakh dogs, given it was possible even from Delhi, would that then mean that Delhi is sanitized and there's not a single dog going to come in from anywhere else into Delhi? No. In the next 3 months, we would have more unsterilized dogs from neighboring areas coming into Delhi, fighting for territory, and we'd be back to square one in less than a year. Because this is not a simplistic way of resolving things. World Health Organization has spelt out how cities such as Delhi with urban solid waste problem can resolve the scavenging animal issue, and that is through the Animal Birth Control Program. The National Center for Disease Control, NCDC, which is our own Government of India's body, has concurred with that, has come up with a national action plan on rabies eradication along the same lines. In fact, this very year, the Director General of Health Services has indicated that the data of dog bites that's coming out is faulty. It is not correct because it's not collected at source in a segregated manner, whether the dog bite is of a pet dog or a stray dog. A lot of people who are rearing and keeping pit bulls and Alsatians and Rottweilers and you name it, all kinds of fancy breeds, which are also regulated by the Government of India, but not implemented by the states under the dog breeding and marketing rules of 2017. So these dogs also contribute to a very large number of bites, which the medical authorities now have the mandate to record in a particular format given by the DGHS. That format will start giving us the correct data probably from next year onwards. Because this year, up to this year, all the data that we've got is a cumulative of all the post-exposure rabies vaccines that have been disbursed to people. And sometimes every single vaccine that is given is recorded as a single dog bite. So for one dog bite, the 5 doses required, 5 repetitive dog bites are recorded, and that has been something that the states pointed out, which the center acknowledged, and now corrective measures have been taken.
Okay. So we need to have the data right to get the solution right. All right. Okay. Rahul Ishwar, the fact is there is a problem. Nobody's denying it. Especially where Delhi is concerned, the numbers say it very clearly. But is this the solution? Because clearly, after speaking to multiple people who've been working in this sector, this is definitely not the solution. We've got to work towards something which doesn't cost our infrastructure the way this will. Number one. Number two, where it's implausible because an MCD that has failed till now, you're entrusting the same body to carry out, something which they're going to fail at. It's impossible in 2 months to create shelters, which Delhi will end up spending more on dogs than it does spend on health for public. Ma'am, everyone understands that there is a problem. In 2023, it was reported somewhere around 3 million dog bite cases and nearly 286 deaths from dog bite, as reported by our mainstream media. In 2024, more than 5 lakh victims of these dog bites were children under the age of 15. So yes, there is a very serious problem. See, I don't hate dogs, neither am I a dog lover. My humble submission is that we should give priority and precedence to human life, and that is non-negotiable. Yes, I understand and respect the outrage from our movie industry, people like John Abraham, people like, across civil society, many dog lovers, we respect that sentiments because, we in Indian culture has always respected various animals as part of godly nature too. But having said that, the human life cannot be compromised. So it's up to, to bring out a solution, the animal lovers, the caregivers, the food givers, they need to come together, find out a solution in accordance with, especially today's Honorable Supreme Court Chief Justice has taken a position that he will look into it again. Perhaps he will reconsider it. So they need to find a solution. But having said that, the ordinary people out on the road is getting very impatient. Let us not close our eyes towards that kind of an impatience that's happening. For example, my home state, Kerala, 2 children were killed by this dog bites. When we meet their family, it's a scar that even stays in our mind for an entire lifetime. So it's a very serious issue that a solution needs to be done. And let me have no shyness in saying the precedence and the preference go to a human life rather than a dog's life. With no disrespect to any animal's life. That human life is sacrosanct. We need to take care of that. And in the order of things and in the scheme of things, we have more priority. And some kind of a fast solution should be taken care. Otherwise, people are already getting impatient. There were many killings regarding dogs by ordinary people reported across India. So please bring out a solution. Please help us get rid of this menace. And that's a very serious. So one needs to work toward the solution. I don't think anybody is denying that, but this is definitely not the solution. Are we willing to sacrifice lakhs of dogs because the inability of one agency to do their job? That's the basic question. I want to quickly move on to I think we're getting some news break coming in and we'll go back to our panelists on the same. Well, you have now Menaka Gandhi, who's appealed to the Chief Justice of India, urging the CJI Gawai to hear all sides, suggesting hope CJI makes a call in view of law. Appeal after CJI said will look into the matter. All of this coming in at the wake of Menaka Gandhi, animal rights activist. She's a former BJP MP. She lost her election though, so we're going to correct that. But the latest coming in is that after the Chief Justice of India has come in to say that he will look into the matter, you have Menaka Gandhi now appealing to CJI Gawai to hear all sides, that she hopes that the Chief Justice of India makes a call in view of law. Listen in. ये तो बहुत ही हम लोग होपफुल हैं क्योंकि ये वाला ऑर्डर तो इतना खराब और इसमें पिछले 2 दिन से इतना बवाल मचा है। औरतों को मारा गया, पुलिस वाले निकल रहे हैं, वायलेंस तमाशा हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। क्या फ़ायदा? क्योंकि वो ऑर्डर इतना रबिश था कि वो सब लोग जानते कि हो नहीं सकता। तो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको फिर से देखना है तो हमारी उनसे हार्दिक इच्छा है कि वो सब तरफों को सुन करके जो सेटल लॉ है उसको देख करके तब वो ठीक करें। All right, I want to cut across to Dr. Rasher. Dr. Rasher, because we are looking at solutions, the only solution is sterilization. So we are looking at a long window. There is no quick fix solution to what we are actually facing right now, which many would think is an epidemic kind of proportion where dog bites are concerned. Once again, going purely by the figures that exist.
Right. Sterilization is absolutely the solution, but I think Ms. Gauri Molaki wanted to say something, so maybe we let her speak first and I can come in after that. All right, Gauri Muleki, you wanted to come in? Go ahead. I'll answer that very question for Yeah, you. go ahead. Basically, the rules that the central government has promulgated in 2023 also provide for short-term respite, but only if it is followed. Rule 16 of the Animal Birth Control Rules 2023 says that if there is any dog that has bitten any person, if such a person has actually been bitten, not just because somebody is scared of such and such dog, looking at it or barking at it, but if there is a biting dog, it can be picked up, isolated, identified, picked up, kept in the animal birth control center in an isolation quarantine ward, and then monitored for presence of rabies or not. And there's a whole process given in it. However, the 20 shabby little ABC centers that MCD runs in Delhi rarely have isolation centers. They need to be brought under the regime of project recognition throughout the city. They've still not done it. We are in High Court against MCD in contempt for not following the central government rules. For the longest time, the previous government refused to follow any rule made by the center. Now we are hoping that sense will prevail and the new government will follow the central government rules and make the ABC centers more robust. For short term respite for feeders also, Rule 20 prescribes that feeding points, where there's conflict, one person doesn't want dogs to be fed here or there is a committee that can be made under the chairmanship of the district animal husbandry officer, who will have a police wala and the RWA person and the feeder, and they will make a consensus feeding point in the neighborhood, which is acceptable to all. But for that, some amount of effort has to be put in. How is it that UP and Uttarakhand have put in a lot of effort? Because they started early. They are giving results now. Delhi started 25 years ago, spent hundreds of crores, and still it's only basically filled up pockets of MCD officers, and the Delhi population is still at large with all their problems. I Okay. just want to make one short point more, Preeti. While we are all very worried about public health risks because of presence of street dogs, let me put it on record that public health will be massively compromised if we make ghettos or concentration of camps of dogs around the city. These will be such biological, focal points of all pathogenic activity. For kilometers around these places, people will not be able to live. These will be just such complete biohazards that Okay. Delhi does not need it. That's how the Black Death actually started Okay, well, spreading Dr. in Bagai, we've London. spoken about this a couple of days ago. Dogs essential to the scavenging cycle where Delhi is concerned. But final comments, Dr. Bagai. I'm going to cut across to all of you. Dr. Bagai, please go first. So a failure of a system as far as the civic bodies are concerned for the last 25 years is not defining what we need to do further. We need more number of dog shelters. We need better care of the dogs, but we also need to investigate where has all this money gone over the past 20 decades. But to have, again, my basic point is if you have stray dogs outside your homes, at some point of time, many people are going to get bitten. My limited point is, for me, that is unacceptable. All right, let's quickly cut across. Dr. Rasher, final comments, sir. Yes, I just wanted to add a little bit, following the entire biohazard, the human health hazard that this decision is going to create. You must have heard of the term herd immunity, right? I mean, we all heard about it during COVID, and there was a reason why mass vaccination was carried out, because when about 30% of the population is vaccinated, it greatly increases the protection from that virus from spreading, right? Similarly, right now with the animal birth control program in place, a majority of the dogs, I mean, all the dogs that have been picked up and sterilized and put back are vaccinated. So we need to understand that rabies does not originate from the dogs. The dogs themselves are victims of rabies. They've been bitten by either a rat or a wild animal, maybe another dog that's come from outside. And these animals will keep coming in
these dogs are vaccinated and therefore they kind of protect us. The unvaccinated ones are the ones that fall victim to rabies and go on and to bite humans. That's a very important point to understand, because if we start picking up all these sterilized dogs and vaccinated dogs and putting them in shelters, the new dogs that Gauriji talked about that are going to come in are going to be unvaccinated, unsterilized, and the chances of rabies propagating is going to be more. These dogs are also going to have, fights amongst themselves. They're going to set up a pecking order, and when they fight amongst themselves, humans are going to get bitten. This is, I mean, it's common sense. People need to think long term. This is like some random order where you just decided, okay, let's build this ashiana. It's not an ashiana. It's going to be an absolute ghetto, like Gauriji said. And it's shameful that the Supreme Court of India has come up with an order like this. All right, final comments. We have Rahul Ishwar. Final comments, sir. Then we're going to go into a quick break. I would humbly urge, we should all be very mindful and respectful when we deal with a Supreme Court verdict or a Supreme Court order. They are the highest court of our land, and we should be very sensible to respect their verdict. We may agree or we may disagree with those particular verdicts. Supreme Court has taken a drastic step because of the gravity of the issue on ground, and human beings' priority cannot be compromised, and that is a sense that we should all have, because tomorrow if something bad happens, people can really take, and that has really happened too, because at the end of the day, a human life is more important than dog's life, and there are no two ways about it. I'm going to just leave it at that. We're going to let our viewers decide. The debate continues both in court and outside. All right, joining me right now is BJP Leader Vijay Goyal, who has lauded the order coming in from the Supreme Court where dogs are concerned that they need to be put in shelters, the stray dogs, in the next 8 weeks. Of course, that has been contested with both inside and outside court. Vijay Goyalji joins us. Vijay Goyalji, this is something that has not just Delhi divided, but the country divided. आपको लगता है, you think that this order should be implemented not just in Delhi but all across India. Why do you think this is the best solution? क्योंकि जो dog lovers हैं, जो animal activists हैं, वो तो कह रहे हैं that this is nothing but a death warrant for at least 9 to 10 lakh dogs in Delhi NCR region. देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम्स में भेजने का फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। एक बात आप समझ लीजिए, ये डॉग लवर्स या एनिमल लवर्स गिनती के हैं सिर्फ। हमारे साथ सारी दिल्ली की RWAs हैं। सारी का मतलब है 500 या 1000 से ज्यादा होंगी RWAs। एक भी RWA आप ऐसे लाके दिखा देंगे जो ये कहेगी कि ये फैसला ये गलत है और कुत्तों को सड़कों पे रहना चाहिए, तो मैं समझ लूंगा कि एनिमल लवर की बात सही है। एक भी RWA कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, देश भर में 12 करोड़ कुत्ते हैं। मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बाकी की स्टेट गवर्नमेंट्स को भी इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। एनिमल लवर्स 2 इशू उठा रहे हैं आज की डेट में। पहला इशू इनका यह है, अगर आप मेनका गांधी जी से लेकर सबको आप सुन लेंगे तो पहला इशू इनका यह है, इट इज नॉट पॉसिबल, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास शेल्टर होम्स नहीं है, हम कुत्तों को कैसे भेजेंगे वहां पर, और वो कहते हैं कि किसी चीज की कोई सुविधा नहीं है जी। पर जब मैं उनसे कहूंगा, मान लीजिए हमारे पास शेल्टर होम हो, मान लीजिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और मान लीजिए हमारे पास सारी फैसिलिटीज हो, तब क्या आप डॉग्स को शेल्टर होम्स में जाने का समर्थन करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? तब वो हाथ पीछे खींच लेंगे। तो इसका मतलब है वो 2 मुंह से बात कर रहे हैं। दूसरा इशू वो ये उठाते हैं कि भाई, मैं उनसे अगर पूछूंगा या आपसे भी मैं पूछूंगा कि दूसरा सोल्यूशन क्या है आपके पास, क्योंकि आपको तो मालूम है 1960 से पहले तो कुत्तों को गुड स्लीप दी जाती थी। मैं पूछूंगा आपसे, आपके पास क्या सोल्यूशन है, या जो एनिमल लवर्स हैं उनके पास क्या सोल्यूशन है? वो सिर्फ एक सोल्यूशन बताएंगे, वैक्सीनेशन एंड स्टरलाइजेशन। तो भाई वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन भी आप कर लीजिए, और आपने करके भी देख लिया है, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। पर विजय गोयल जी, आपने कर लिया वैक्सीनेशन। विजय गोयल जी, इसमें दो पक्ष हैं। विजय गोयल जी, लास्ट लाइन बोलिए सर, बोलिए। हाँ, लास्ट लाइन है, 12 करोड़ कुत्ते देश भर के अंदर हैं, और दिल्ली में 8 लाख से अधिक स्ट्रे डॉग्स हैं जी। वो तो यही रहेंगे ना, वो तो स्टरलाइजेशन करके कहीं जाएंगे नहीं, वो इसी तरह से काटते रहेंगे। दिल्ली में 2000 केसेस पर डे डॉग बाइट्स के केसेस हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिला उनके ज्यादा शिकार हैं। लोगों ने सैर करना बंद कर दिया पार्कों में, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर
भेजना बंद कर दिया है। तो आप इनसे ये पूछ के बता दीजिए इनके पास क्या सॉल्यूशन है कि लोगों को कुत्ते काटे नहीं। विजय और गोयल जी, पहले हमारे सामने मानव हित है या कुत्ता हित है? बट विजय गोयल जी, जो आप कह रहे हैं कि आपने स्टेरिलाइज करके देख लिया, वो हुआ नहीं। विजय गोयल जी, आप एमसीडी से काफी वाकिफ हैं जो दिल्ली में है। अब आपको मैं एक फिगर है जो एमसीडी से ही आया है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे सब स्टेरिलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ है, कुत्तों की संख्या कम हो गई है। एक दिल्ली ऐसा शहर है जहां पर कुत्तों की संख्या डबल होती जा रही है। जो पहले 2009 में कुत्तों का सेंसस हुआ था, फिर 2018 में हुआ, डबल ही होती हुई जा रही है। तो जो एमसीडी है, एमसीडी का अटर फेलियर है कि आप स्टेरिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि बाकी शहर, बाकी स्टेट्स कर पा रहे हैं। एमसीडी को कोई दिक्कत है, एमसीडी नहीं कर पा रही है, पहली बात। दूसरी बात विजय गोयल जी, एमसीडी का बजट, मैं आपको नहीं, आप भी सुन लीजिए सर, क्योंकि देखिए आप एक पक्ष रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुत्तों के पक्ष में हूं, पर क्योंकि आपका एक पक्ष है, मैं आपको जो एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं वो बता रही हूं। जो दूसरी बात विजय गोयल जी, एमसीडी का बजट 500 करोड़ है इसमें, जो कुत्तों के ऊपर है। उन्होंने सिर्फ 70 लाख स्पेंड किए हैं। जो पिछला फाइनेंशियल ईयर का डेटा जो पब्लिक हुआ है, सिर्फ 70 लाख जो स्पेंड किए हैं शेल्टर बनाने में। अब उन्होंने बाकी सब कह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन में स्पेंड कर दिया है। जो आंकड़े हैं और जो स्टेरिलाइजेशन हुई हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो कहीं पर या किसी ने पैसे खाए हैं या बनाए हैं। ये सारा एमसीडी की गलती है। और अब हम कह रहे हैं कि मानव हित या कुत्ता हित, इसमें मैन मेड क्रिएशन है। ये प्रॉब्लम एमसीडी की क्रिएटेड है दिल्ली में, ये हम क्यों नहीं मान रहे हैं? मैं जवाब दूं? प्लीज सर। हेलो, आवाज चली गई सर, प्लीज सर। देखिए, पहले आपके फैक्ट्स ठीक नहीं है जी। सुनिए, सबसे ज्यादा डॉग्स की जो प्रॉब्लम है, स्ट्रे डॉग्स की, वो यूपी के अंदर नोएडा और गाजियाबाद के अंदर है। अगर मैं आज आवाज मारूं तो पूरा गाजियाबाद उठ के दिल्ली के अंदर आ जाएगा कि गोयल साहब हम आपके साथ हैं। पूरा नोएडा उठ के आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों जगह के ऊपर इन स्ट्रे डॉग्स के लिए मुझे इनवाइट किया गया था और दोनों जगह पर मैंने मीटिंग ली थी। मैंने उनको कहा था विजय गोयल माहौल बनाता है, एक्शन नहीं कर सकता, वो माहौल बनाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट्स इसके अंदर जागे। दूसरी बात यह है, एमसीडी नहीं करती स्टेरिलाइजेशन। मैं आपको बताऊं जी, एमसीडी ने 20 एनजीओ टेंडर देती जो है, ये एनिमल लवर्स चलाते हैं, इनके ऊपर छोड़ रखा है। सुनिए मैडम, टेंडर तो एनजीओ उठा रहे हैं ना, एनजीओ उठा रहे हैं। सुनिए बात को, जिनको आप देना चाहें, जिनको एमसीडी देना चाहे उन्हीं को टेंडर देती है। टेंडर निकालती है जी 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 जी, बोलिए सर। नहीं, ये सिर्फ सोसाइटीज को देते हैं और इसके अंदर ज्यादातर एनिमल लवर्स ही सामने आते हैं। जैसे मेनका गांधी जी की भी एक संजय गांधी जी के नाम से वो है, उनसे पूछ लीजिए आपने कितने केस के स्टरलाइजेशन के केस किए हैं, तो आपको पता चलेगा ठीक नहीं किए। एमसीडी इतने सालों से उसमें खूब करप्शन रही है। पर मैं आपको दूसरा सवाल उठा रहा हूं जी, कोविड के कारण भी इस काम में बहुत कमी आ गई थी, इसलिए कुत्ते बहुत बढ़ गए थे। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछ दीजिए, 8 लाख कुत्ते, चलो बाकी तो आपने सारे स्टरलाइज कर लिए, ये जो 8 लाख कुत्ते रोज सड़कों पे घूम रहे हैं, ये काटते रहेंगे तो ये बच्चों को काटते रहे, आप इसके हक में हैं क्या? अगर वो कहेंगे हक में हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, फिर तो वो कहते हैं कि नहीं कुत्ता ज्यादा प्यारा है। क्या है, लोगों ने बड़ी बड़ी नस्ल के कुत्ते अपने घर में पाल रखे हैं, उनको लगता है हाय हमारा डॉग है ये स्ट्रे डॉग। अगर ये वास्तव में एनिमल लवर हैं, पहली बात ये सारे वेजिटेरियन हैं क्या? जरा इनसे पूछ के देख लेना। दूसरा, इनमें से कितनों ने कुत्ते गोद लिए हैं? जैसे नीदरलैंड में कुत्ते गोद लिए हैं, इनमें से इन्होंने कितने गोद लिए? कोई कुत्ता गोद नहीं लिया है। ये सिर्फ एक काम करते हैं, एक तो इनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, एक दूसरे एनजीओ से फंडिंग मिलती है, गाड़ियां आती हैं, कुत्तों को खाना डाल के चली जाती है, और अब तो ये कुत्तों को मीट खिलाते हैं, तो कुत्ते तो अपने आप ही हिंसक हो जाएंगे। कर्नाटक के अंदर सरकार ने कहा कि हम इनको मीट के साथ बिरयानी खिलाएंगे। अब ऐसी अगर प्रथा है तो आप कुत्ते पाल लीजिए, इनकी संख्या जो है, हम 1 पैदा करते हैं वो 4 पैदा करते हैं, इनकी संख्या हमारी संख्या से ज्यादा होने वाली है। फिर हमें शेल्टर होम्स में जाना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी शेल्टर होम में आ गए हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर निकलने में डरते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखना, आप आरडब्ल्यूएस के अंदर, आप इतना बड़ा चैनल है, आरडब्ल्यूएस के अंदर सिर्फ एक सर्वे कर लीजिए, आरडब्ल्यूए लोगों को रिप्रेजेंट करती है, कोई नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कितने एनिमल लवर सामने आएंगे। गोयल साहब, ये कोई कॉन्टेस्ट कर ही नहीं रहा है कि दिल्ली में एक मेनेस है कुत्तों का, उनको
आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है। पर हम यहां पर क्यों आए और सोल्यूशन क्या है? जो आपने फिगर्स दिए, मैं आपको साफ फिगर देती हूं। उत्तर प्रदेश ने पिछले साल 2.8 लाख स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज किया है। अगर मैं आपको दिल्ली का इसमें फिगर दूं, वो 1 लाख भी नहीं बनता है, 1 लाख से भी कम है दिल्ली एनसीआर रीजन। बहुत ज्यादा गैप है। चलिए आप एक्सपेंस भी मान लीजिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत, ये जहां पर ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, मैं 5 शहरों की बात कर रही हूं, 5 शहरों की, उनमें से लखनऊ एक शहर है नंबर 1। तो कहीं पर हम ये क्यों नहीं मान रहे कि एमसीडी का बहुत बड़ा फेलियर रहा है? अगर आप सिर्फ 70 लाख अपना बजट में से निकाल के स्पेंड कर रहे हो आप स्टेरिलाइजेशन के लिए, आप सेंटर्स के लिए, तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ फिगर्स दे रही हूं, बैंगलोर, बॉम्बे इससे कम से कम 30 गुना स्पेंड करता है फॉर एनिमल शेल्टर, जो हम नहीं करते। वो हमारा बजट है। हम ये क्यों नहीं मानते कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है? नहीं, मैं ही कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, आपका एक फैक्ट और गलत है, एमसीडी का बजट कोई 500 करोड़ नहीं है। तो एमसीडी के पास तो पैसा ही नहीं है, और उनके पास 500 करोड़ क्या, मुश्किल से 10-15 करोड़ का बजट होगा, जहां तक मेरी जानकारी है। 5 करोड़ बोला मैंने सर, 5 करोड़ वगैरह के स्टेरिलाइजेशन। विजय गोयल जी, 5 करोड़ कुत्तों के स्टेरिलाइजेशन के लिए 70 लाख आपने, सिर्फ 70 लाख आपने स्पेंड किया इनका शेल्टर बनाने के लिए, सिर्फ 70 लाख। और वही 11 करोड़ बीएमसी 11 करोड़ स्पेंड करती है इस चीज के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एमसीडी को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी, और मैं एमसीडी को खुला क्रिटिक हूं कि एमसीडी के अंदर करप्शन है। पर मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, एमसीडी ने अब ये सारा काम आउटसोर्स कर रखा है, तो डेफिनेटली कुछ चीजें होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जो एनिमल लवर सॉल्यूशन नहीं बनाते। पहला सॉल्यूशन इसका ये है कि सेंसिस होना चाहिए। अभी 10-12 साल से तो सेंसिस ही नहीं हुआ है कुत्तों का। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, जो मैं 8 लाख कुत्ते कह रहा हूं, वो 2018 का सेंसस है, 2018 का सेंसस है जो आप कह रहे हो। जी जी, उसके हिसाब से 8 लाख कुत्ते हैं, तो कम से कम 10 लाख तो होंगे। एमसीडी का ही फिगर है सर, अब वो सेंसस के तौर पे हुआ या क्या? समझ लीजिए बात को जी। पहले सेंसस तो खैर नहीं हुआ, तो पहला तो यह है कि सेंसस करवाना चाहिए जी। दूसरा, जियो चिप जो है उसको लगाना चाहिए। तीसरी बात है, अब ये जो लोग कहते हैं शेल्टर होम कैसे बनेंगे, अरे वैसे ही बनेंगे जैसे कोविड की आफत आई थी और हमने डिसीजन किया कि हम रातों रात अस्पताल खड़े करेंगे, कैंप लगाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, वैक्सीन को डेवलप करेंगे। ये जब सब हमने डेवलप किया तो हम गवर्नमेंट के ऊपर छोड़े ना। अभी तो उन्होंने सिर्फ 2 महीने दिए हैं, 2 महीने के अंदर इन एनिमल लवर्स को चाहिए पहले रिजल्ट तो देख लो। अगर रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे तो और आगे बढ़ेंगे। आप तो एक दिन भी रिजल्ट देखने के लिए तैयार इसका आर्ग्यूमेंट ये है, देखिए आप उसी बॉडी को ट्रस्ट कर रहे हैं जिसने अभी तक आपको फेल किया है। वही एमसीडी जिसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं, जिसके पास अभी सिर्फ 20 स्टेरिलाइजेशन सेंटर हैं, उसी बॉडी को आप ट्रस्ट कर रहे हो कि वो ओवरनाइट इतने सेंटर बना दे कि वो 9 से 10 लाख कुत्तों को हाउस कर ले। तो ये साफ, विजय गोयल जी, क्या, चलिए मैं आपसे एक ये साफ सवाल पूछती हूँ, आर यू ओके, क्योंकि आप मानव हित और कुत्ता हित की बात करते हैं, आर यू ओके दैट यू साइन इन knowingly that this is a death warrant for 9 or 10 lakh dogs? नहीं, डेथ वारंट तो वर्ड का यूज करना बड़ा ही गलत है। शेल्टर होम में भी उनकी देखभाल होगी, और ये सारी एनिमल जो लवर हैं, ये शेल्टर होम में उनको जाके फीडिंग भी कराएंगे। मुझे पूरा शेल्टर होम ही नहीं है। अगर आज एज पर दिस ऑर्डर, विवेक गोयल जी, और आप विजय गोयल जी आप मुझे करेक्ट कर लीजिए, एज पर दिस ऑर्डर, अगर ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हमें करना है इन ट्रू स्पिरिट ऑफ द लेटर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, तो दिल्ली सरकार का एक्सपेंडिचर कुत्तों पे ज्यादा होगा, पब्लिक हेल्थ पे कम होगा। अगर सही में करना है तो क्या हम तैयार हैं? मैं एक बात कह रहा, ना तैयार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कहीं गई नहीं है। हम दिल्ली गवर्नमेंट या एमसीडी दोबारा उनको अप्रोच करेगी और कहेगी, सर 2 महीने में हमने इतना काम करके दिखाया है जो पॉसिबल था, आप हमको थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन और दे दीजिए।
तो मैं तो पूरा आश्वस्त हूं कि एक शेल्टर होम भी इन्होंने बना दिया और ठीक गया तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चला जाएगा। और दूसरा, खाली दिल्ली गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। और दिल्ली तो वैसे भी नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, तब हम सब मिलकर काम करेंगे। पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे और बिना देखे आप उसका पहले दिन से विरोध करने लग जाएं, उस बात का विरोध जो कि आरडब्ल्यूए चाहती हैं, सारी आरडब्ल्यूए चाहती है कि इन कुत्तों को यहां से निकालो, शेल्टर होम में भेजो, ज्यादा अच्छी देखभाल करो, पर रोज हमारे बच्चों को काटे, ये हम नहीं सहन कर सकते। दूसरा, ये एनिमल लवर्स कब से चिंता करने लग गए इंफ्रास्ट्रक्चर की? मैंने तो आज तक इनको किसी इशू पे नहीं और देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 20 एनजीओज इन्हीं एनिमल लवर्स की हैं। उनसे पूछिए आपने इतने सालों में क्या काम किया है जो आज आप इसका क्रेडिट लेने के लिए आ गए हैं कि वी आर द डॉग लवर्स, वी आर द डॉग लवर्स। विजय गोयल जी, चलिए, दिस इज नॉट अबाउट दिस 20 एनजीओज। ये टेंडर निकालती है एमसीडी, आपको भी पता है टेंडर कैसे दिए जाते हैं। सो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट डिबेट, दैट इज एन एंटायरली सेपरेट डिबेट व्हिच वी कैन हैव ऑन द एमसीडी एंड द लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एमसीडी व्हाट इट्स सपोज्ड टू डू। वो तो बात ही नहीं है सर। बात एक तय है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चरली जो आप कह रहे हैं, एटलीस्ट प्राइमा फेसा इट्स इम्पॉसिबल। आप उसी एजेंसी को ट्रस्ट कर रहे हैं जिस एजेंसी ने बार बार आपको फेल किया। ये पहले भी हो चुका है कि हमने कुत्ते उठा कर मेरा लास्ट क्वेश्चन नहीं, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। एक स्कैवेंजिंग चेन है जो दिल्ली में भी है। हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना चाहते हैं कि हमें कुत्ते नहीं चाहिए स्ट्रीट्स पे, मैं भी चाहती हूँ, सभी चाहते हैं, पर एक स्कैवेंजिंग चेन है। अगर आप कुत्तों को हटा देंगे, रोडेंट्स, जो चूहे, बिल्लियों की संख्या, मंकीज की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इन कुत्तों को आप अगर जैसे अगर 10 लाख से 9 लाख कुत्ते हैं, ये मैं नहीं बोल रही, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर आप इनको हाउस करने लग जाएंगे, दे विल बिकम अ बायोहैजर्ड, ये हेल्थ हजार्ड बन जाएगा। पर नीदरलैंड के अंदर सर, हम तो लोगों ने थोड़ी कुत्तों को अडॉप्ट कर लिया, वहां तो कोई सर नीदरलैंड नहीं, सुनिए ना मेरी बात को, एग्जांपल्स तो दिए जाते हैं ना। जब नहीं, फिर तो किसी भी आर्गुमेंट में किया जाता है। मैं एक और बात कहता हूं आपसे, ये एनिमल लवर्स क्या चाहते हैं, क्या करें हम लोग, बताइए, चलिए क्या करें? सर, स्टेरिलाइजेशन का, मान लो इन्होंने कहा स्टेरिलाइजेशन करो, हम स्टेरिलाइजेशन कर दें। जी बोलिए सर, एक मिनट, हम इनका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल तो ये जो 10 लाख कुत्ते हैं ये कहां जाएंगे? ये तो काटते रहेंगे। मैडम, मैं भी वही बात कर रहा हूं, पर ये फिर कुत्ते जाएंगे कहां जो आप 10 लाख सड़कों पे काट रहे हैं? इनको क्या करेंगे हम, वो बता दीजिए बस। विजय गोयल जी, बात वो नहीं है, नोबडी इज डिनाइंग, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। मैं साफ बोल रही हूं दैट इट इज बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ी समस्या। यही सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन है कि हम मान लें दैट यू आर साइनिंग, कोई सोल्यूशन नहीं। आप फिर हम मान लें knowingly we are signing the death warrant of 9 to 10 lakh dogs because we could not perform our job, the MCD could not perform its job. सही बात सर? मैडम, जो लोग अपराध करके, आप देखिए, सुनिए, गाय, मुर्गी, मछली, बकरा, सुअर, ये सब कट रहे हैं, तो मैंने नहीं देखा कोई एनिमल लवर इनके लिए सामने आ रहा हो जाके। आज तक एक भी आवाज नहीं सुनी है। केवल कुत्तों के लिए, क्योंकि इन्होंने एक एक कुत्ता घर में पाल रखा है, तो इनको लगता है कि नहीं, हमारा कुत्ता है तो बाहर भी कुत्ते हैं। अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि क्या बच्चों को वो ऐसे ही काटते रहे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे मुझे। तो सर, आप बेसिकली बोल रहे हो कि क्योंकि शेर आपके ऊपर हमला करेगा, भेड़िया भेड़िया तो आपके ऊपर कुत्ते भी हमला कट करेगा। जाए। नहीं मैडम, मेरे मुंह में मत डालो, ऐसा मत करो डिबेट कि आप मेरे मुंह, मैं ये कह रहा हूं तब ये नहीं बोलते हैं। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला कुत्ते भी कट जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे करेक्ट कर लो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। G20 सर हुआ, G20 में दिल्ली सरकार का ऑर्डर था कि मतलब एक ऑर्डर आया कि सारे कुत्ते हट जाने चाहिए। दिल्ली सरकार से नहीं, सरकार से ऑर्डर आया कुत्ते हटा दो। उनको कुत्तों को पकड़ के शेल्टर्स में लेके गए। इतनी सारी रिपोर्ट्स आई कि ये इम्पॉसिबल है। और तब ऐसा भी नहीं था कि आपको सारे के सारे 10 लाख कुत्ते हटाने थे, आपको एक एरिया से हटाने थे जहां पे G20 हो रहा था। तो वो एक एग्जाम्पल है जो अभी वो फेल रहा। तो क्या ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है ना सर? बात ये है। जी मैडम, तो मेरा आप जवाब नहीं दे रहे, तो कुत्ते ऐसे ही काटते रहें फिर, अगर ये सोल्यूशन नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये है फिर हमें शेल्टर में रहना पड़ेगा जी।
जो कि लोगों ने अब रहना शुरू कर दिया है। अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते आप। कभी चलिए आप मेरे पार्कों में मेरे साथ, आपको पता चलेगा कि हर आदमी के हाथ में एक लाठी आ गई है और जो बच्चे हैं वो खेलने जाते नहीं है पार्कों के अंदर, माँ बाप ही नहीं भेजते उनको। तो ये कुत्ते का I understand that for a lot this is an elitist problem क्योंकि you can sit in TV studios, you can sit in gated colonies and make these statements of animal rights and how animals and dogs need to be protected. Ultimately, in colonies where a child is taken to school, an elderly who's going for a morning walk or a delivery boy, they are facing these problems, sir. No one is denying that. But my basic question is this the answer? Because आप मुझे करेक्ट कर लो सर, जैसा अल्टीमेटली यही निकल के आया है कि चलो इफ वी हैव टू सैक्रिफाइस 10 लाख जॉब्स फॉर द एमसीडी नॉट डूइंग इट्स जॉब, तो ठीक है, वी शुड डू इट। करेक्ट और नॉट सर? तो सुनिए, देन यू सैक्रिफाइस द ह्यूमंस, क्योंकि आप जानते हैं एक साल में 35 लाख कुत्ते बाइट करते हैं जी, और रेबिस जैसी बीमारी उनको होती है। तो इसका मतलब यह हो गया कि दिल्ली के अंदर 2000 जो स्ट्रे डॉग्स बाइट्स कर रहे हैं वो करते रहें, रेबिस होती है तो होते रहे, पर कुत्तों को सड़कों पे खाना खिलाते रहो, गंदगी करवाते रहो, उनकी जान हमारी जान से, ह्यूमन लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं उसको। मैं ऐसा नहीं देख रहा जैसा आप देख रहे हैं। नहीं सर, मैं देख नहीं रही। देखिए, दिस इज जर्नलिस्टिक इंक्विजिशन, क्योंकि कोई एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट नहीं है, मैं आपसे सारे सवाल कर रही हूँ, बात वो नहीं है। बट इट इज अ टफ कॉल and are we that ruthless that we are deciding that we are okay that 9 to 10 lakh dogs are sacrificed at the altar of citizen health is what we are suggesting it to be? It's a question that people have to answer, and I agree आपने जो अपने तर्क रखे that it is a problem in Delhi because Delhi records the highest number of dog bites across the country. I thank you, sir, for joining us. Thank you for putting your point of view forward. Appreciate it. We're going to leave it for our viewers to decide on where they stand on it. Understandably, it is a deeply contentious issue.